commercialization through climate-smart agriculture, ecotourism, and food processing, together creating a unified, resilient, and future-ready state economy. We are operationalizing the core urban region economy model to ensure sustainable and equitable growth. Telangana is urbanizing rapidly as urban population in projected to reach 53.8% by 2031. In view of this, recently my government has trifurcated the GHMC into three separate identity: Cyberabad Municipal Corporation, Malkajgiri Municipal Corporation, and the reconstituted GHMC. This restructuring of the municipal area will enable closer supervision of civic services, quicker grievances redressal, improved infrastructure planning, and more balanced urban development. It will strengthen democratic decentralization by bringing urban governance closer to the people in the true spirit of the 74th Constitutional Amendment. The government also framework including HM, WSSB, and Hydra. The enhanced law enforcement and administrative efficiency, and government has reorganized the Hyderabad police jurisdiction into 4 commissionerates: Hyderabad, Cyberabad, Malkajgiri, and the newly established future city commissionerate across the metropolitan region. क्योर क्षेत्र को प्रदूषणकारी उद्योगों से मुक्त करने के लिए सरकार ने HILT नीति के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को लाइफ टैक्स से छूट देने का आदेश जारी किए हैं। इसकी शुरुआत के तौर पर सरकार क्योर क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हैदराबाद झीलों और चट्टानों का शहर है और सरकार मुख्य शहरी क्षेत्र की सभी झीलों और तालाबों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित हाइड्रा ने 1045 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि और जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की शहरी संपत्तियों को सुरक्षित किया गया है। बतुकम्मा, कुंटा, नल्ला चेरू और बामरुक उद्दीन दौला झीलों को हाल ही में मुक्त करा करके उनका पुनरुद्धार किया गया है। ये सभी मुक्त कराए गए तालाब विकास केंद्रों के रूप में उभरेंगे, जो एक फलते फूलते झील अर्थव्यवस्था लेक इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे और महिलाओं को अस्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। The government is revitalizing Hyderabad
ecological corridor through the 55-kilometer Mushi riverfront transformation project extending from the Usman Sagar and Himayat Sagar